Hello, good morning, everyone. How are you? Good to see you guys back on Saturday with me. Oh, a lot of people are there on the chat. Good to see you guys on time. Hey Keshav, how are you? Keshav, I see a lot of messages from Keshav. Raghav has a question. I was reading that question, Raghav, and you are right. अगर IPO 90 undersubscribe होता है, so they will have to take back that entire IPO back, and all the people who have invested money in the IPO so far, जो पैसा block होता है, वो उनको वापस करना पड़ता है, right? Then we have Rohan is there, Gunjan is there, Nikita, very good morning, Atharv, good morning, how are you? Nikita is there, Shan is there, Ustad, Swati I see, Sanchita I see, good, Chahel, Surya, Faizan is there, Jyoti, Bhumika, how are you? I'm good, thank you so much. Hi Zeba, hi Asha, Arun, Manvi, how are you? Sagar is also there. Pratidnya, that's new name for me. How do you pronounce? Is it easy for people to pronounce your name Pratidnya? That's a great name. Hey Rohini, how are you? Arsha is there. Rija, Ankit, Sanchita, I see. Good. Koshti is there. Devesh, Jay, Barkatullah, how are you? Harnoor has a question. Hi Anu, how are you? In subjective paper, does quantity matter or quality? Abhi honest answer deta hu iska. I mean, do we have to write answers to the point? See, Harnoor, I'll give you a Brahmastra trick. If you know the answer, the quantity nahi quality matters. ठीक है? If you know the answer, quality matters. If you do not know the answer, आप पक्का नहीं, आपको confidence नहीं है अगर अपने आंसर पे, तो क्वांटिटी बढ़ा दो. ठीक है? That helps, right? नॉनसेंस ऐसे लिरिक्स मत लिख के आ जाना, सैम स्मिथ के लिरिक्स लिख के आ गए, ऐसा नहीं करना है. बट इफ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, try to tell the examiner whatever you feel is the right answer. उसके लिए थोड़ा सा quantity बढ़ा दो. That helps, right? But if you know the answer, you know this is the bang on right answer for this question, quality matters. Quality की 10 लाइन भी लिख दोगे और 7-8 लाइनें भी quality की लिख दोगे, more than enough. You'll get good marks. Right? I used to do that. मैं तो अपने experience से I can tell you. I'm no expert in examinations. I have not been part of the examination department of Board of Studies. But from my own experience of clearing the examinations across the levels in CA, I can tell you, confidence दिखना चाहिए in every answer that you're writing. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाओगे ना, सो एग्जामिनर विल आल्सो फील कि हाँ इसको पता है, probably not able to articulate that well but they know the answer. Underline करो, bullets बनाओ. So every answer should have a format, a starting line, some bullets, bullet points, उसमें underline कर दो, so that the examiner feels कि हाँ they know how, they have studied, they know how to present a paper, और उसके marks मिल जाते हैं. It's a subjective paper after all, right? एमसीक्यू तो है नहीं, उनको पढ़ना पड़ेगा पूरा. Cool. Okay. So I've been called a Santa by now. ये लाल पहनने से Santa में अच्छा है. What else? Ola and Uber and other cab companies, how do they maintain their books? Okay. Like as normal company like P&L and balance sheet? Yes, absolutely. Every company has a P&L and balance sheet. उसके अलावा कोई भी कंपनी दुनिया में उठा लो, उसके पास और कुछ नहीं है. ये एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड है. I'm just giving you answer for any exam that is subjective for you. Right? Cool. दैट्स राइट. पैसा अनब्लॉक करके वापस देंगे, पर ये पूछ रहा था वो अपना आईपीओ वापस ले सकती है? हाँ बिल्कुल ले सकती है राघव. दे कैन टेक देयर आईपीओ बैक, दे हैव द प्रोविजन टू टेक देयर आईपीओ बैक. बस पैसा वापस करना पड़ेगा और कुछ नहीं, राइट? और थोड़ी सी इज्जत जाएगी मार्केट में कंपनी की, और कुछ नहीं. हे गुड मॉर्निंग युवांशी, हाउ आर यू? परफेक्ट, आई एम गुड मयंक, आई एम गुड. Where did we leave last session? कहाँ पे छोड़ा था, कौन से चैप्टर पे थे? किसी को याद भी है या दिवाली की मस्ती में सब भूल गए? देखो मैं तो भूल गया था honestly. I can tell you, last 1 week has been very hectic for me. I तो forgot what we were studying. अभी आज सुबह I had to revise what we were studying. If you can help me as well, what were we studying in the last session? वहीं से शुरू करेंगे. Okay, Tavneet, let's solve your question. For ensuring the success of the loan operation, RBI actively operates in the gift edged market, gilt edged market. Okay, what is the meaning of gilt edged market in this question? यार ये तो मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो नहीं रुको अभी गूगल करके आपको बताते हैं. See, honestly, I'll be honest with you. जो मेरे को नहीं आता है वो मेरे को नहीं आता है, but I can help you by reading. This is a good thing. Gilt edged loans क्या होता है?
Okay, gilt edge means having a gilded edge or edges. Basically, a bonds issued by the term in the British origin and then derivative debt security issued by the Bank of England, whose paper certificates had a gilt edge. Hence, they are known as gilt edged. Acha. So basically what this saying is gilt-edged loans or bonds are someone which are backed by the government, right? Gilt edges means जो हम लोग जैसे आपको याद है dog ears बनाते हैं books में, right? We used to create those dog ears mark कर देते. So those are ear-marked bonds of the government, right? To ensure that these are backed by the government. If the loan fails of the or the person is not able to repay the loan, the government is backing that particular loan through a bond. उसको बोलते हैं gilt-edged market में. That is how RBI also does that. All the governments, especially the European banks or European governments do that. अपनी RBI भी करती है वो. Right? I hope that helps. Perfect. We were doing chapter number 5 IRDI. सिर्फ 4 लोगों ने आंसर दिया, मतलब किसी को याद नहीं था हम क्या पढ़ रहे थे. कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेंगे. Right, chapter number 5, we will start from IRDI. That is right. Thanks, Barkatullah. Thanks, Surya, for telling us. Thanks, Bhumika. Avinash also knew that. Mayank also knew that. Okay. CCI complete ho gaya. So we'll start from IRDI. Thank you, Chahal. Policy holders and provide registration certificate difference between. Jyoti, question thoda sa reframe karke, if you can just send back. If that's a question, I'm not able to understand if that's a statement or a question. पॉलिसी होल्डर्स प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिफरेंस बिटवीन, ये क्या जंबल सेंटेंस भेज रहे हो मुझे? कूल. If RBI has the right to print currency notes, then why does RBI not make some more notes? Great question, Jay. Great question. आपको अभी क्या बोलें कि लेट्स से सीए में इन सीए एग्जामिनेशंस सबको 100 मार्क्स मिलने लग जाएं तो क्या होगा? गिव मी एन आंसर टू दिस, जय. आपको लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इन्फ्लेशन का, इकोनॉमी का. लेट्स सपोज everyone who sits for UPSC exam, IAS बनने के लिए बैठता है, और every student who is going to give an exam of chartered accountancy, सबको 100 में से 100 मिल जाए, सबको 100 में से 100 मार्क्स दे दो, तो क्या होगा? सब बन जाएंगे, सब सीए बन जाएंगे, सब आईएएस बन जाएंगे, राइट? तो वैल्यू गिर जाएगी ना. Absolutely, that is the right thing. Avinash is saying money value will fall down. Exactly. If everyone is getting 100 marks in chartered accountancy, the value of the course will go down. Everyone is becoming IAS, सब सारी value गिर जाएगी, right? The value तभी रहेगी जब which is something which is less, उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी. जो आपको कम मिलता है आप उसको ज्यादा वैल्यू करते हो, राइट? जो आपके पास बहुत ज्यादा है, भरपूर है, उसकी आप वैल्यू नहीं करते हो, राइट? सिंपल है. आपके घर में अगर सिर्फ 2 घंटे सुबह पानी आता है, यू नो द वैल्यू ऑफ वाटर. आपको पता है यार, सुबह अगर पानी नहीं भरा, मोटर नहीं चलाई, तो पानी नहीं मिलेगा आपको, उसकी वैल्यू है. पूरा दिन पानी अगर नल का खोल के बैठे रहोगे. सेम थिंग हैपेंस विद मनी. सेम थिंग हैपेंस विद मनी. इफ आरबीआई स्टार्ट्स प्रिंटिंग अ लॉट ऑफ मनी, रोज 5,000 करोड़ रुपए प्रिंट करने लग जाए, पैसे की वैल्यू ही नहीं रहेगी लोगों को, राइट? फ्री में सब कुछ मिल रहा है, बांटो पैसा. क्या है, मेहनत किसको करनी है? आलसी हो जाएंगे सब. वैसे तो अच्छा है, but from economic perspective, it's not right. Absolutely, because there will be inflation. Inflation का simple मतलब है, right? What does inflation mean? Inflation का एकदम simple meaning है the decrease in the value, right? If something is inflated, that means उसकी value खत्म हो गई है, right? उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, उसकी value इतनी है नहीं, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो. That is what inflation is. If you go to a पार्टी एंड जो पेरेंट्स से ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है मेरा, बहुत ही सुधरा हुआ बच्चा है, आपको लगेगा क्या झूठ बोल रहे हो यार. दैट इज इन्फ्लेशन. दे आर इन्फ्लेटिंग योर कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ योर रिलेटिव्स, बट असली में तो हम नहीं है ना ऐसे. दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. नहीं, आप हो तो अच्छी बात है, हम तो नहीं है. ऑसम. हाँ, ये देखो, इसी कॉन्सेप्ट से समझ आया कि इन्फ्लेशन क्या होती है. Cool. Can we start with chapter number 5 IRDI? थोड़ा सा बचा है. We'll do IRDI, then we have अपना NABARD पढ़ेंगे थोड़ा सा, right? We did RBI, we did SEBI, we did Competition Commission of India. अब हम पढ़ेंगे IRDI और इसके बाद हम पढ़ेंगे NABARD, which is a funding institution. अभी तक हम बात कर रहे हैं नॉन फंडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की,
नाउ आफ्टर दिस विल स्टडी फंडिंग इंस्टीट्यूशन जो एक्चुअली पैसा देते हैं, ठीक है। हाँ, हिमांशु सिंह, मेरे पेरेंट्स तो असली में करते भी नहीं है, सो अच्छी बात है, वो आपके इन्फ्लेशन नहीं कर रहे हैं, वो इन्फ्लेट नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है ना फिर तो। कूल। सेबी हैज पावर टू compel companies to list their shares in one or more stock exchange. What does it mean? इंडिया में देखो दोस्त, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ओके। देर आर अ लॉट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, मतलब स्पेशली दो हैं मेजर। एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। सो सेबी सेज कि आप दोनों जगह अपने शेयर्स लिस्ट करवाओ, राइट। स्टॉक एक्सचेंज कुछ नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज इज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प्स टू क्रिएट एन एंटायर सिस्टम जहाँ पे स्टॉक्स आप लिस्ट कर सकते हैं, कंपनी, लोग आके वहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफ यू एवर यूज एन ऐप फॉर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, आप ग्रो, जीरोधा, ईटी मनी, जो भी आप ऐप यूज करते हो, वेन एवर यू गो एंड बाय अ शेयर, इट आस्क्स यू बीएससी से खरीदना है या एनएससी से खरीदना है। बेसिकली आप ऐसा समझो, दो दुकानें हैं, ओके। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, देयर आर टू शॉप्स वेयर यू कैन गो एंड बाय शेयर्स। वन इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, विच इज बीएससी एंड एनएससी, ठीक है, दोनों दुकानें हैं। सो सेबी सेज आप अपना जो शेयर है दोनों दुकानों पे रखो, राइट, दैट इज व्हाट इट सेज। कूल। साइमा, यू कैन गूगल दैट, हिंदी में क्या लिखा है, भावी वी प्रा, ये तो मेरे को भी समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हिंदी होगी ये तो। इट्स नॉट मैंडेटरी में दोनों जगह लिस्ट करना, बट इट इज एडवाइसेबल, राइट। मैंडेटरी नहीं है, एडवाइसेबल है। SLR and CR both are maintained by RBI, that is right. Sure, Asha, I can spend 30 seconds in explaining CCI in Hindi. I'll do that because I think the chapter ये तो छोटा सा ही बचा है. We'll spend time on the doubts, right? फटाफट से for everyone, I'll do that. CCI in Hindi basically Competition Commission of India क्या कहता है आशा, कि हर किसी को एक फेयर ग्राउंड मिलना चाहिए compete करने के लिए, राइट। मार्केट में अगर आप जाके अपना सामान बेचते हो, इट शुडेंट बी, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मुझे कोई कंपनी दबा रही है या मैं फेयर नहीं है, लोग गलत प्रैक्टिसेस करके मेरा धंधा चौपट कर रहे हैं। इट शुड बी अ फेयर प्लेस, राइट। वो फेयर प्लेस कैसे होती है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया प्राइसिंग पे, प्रोडक्ट पे, कि ऐसा नहीं होगा कि एक बड़ी कंपनी आके, मान लो आप लहंगे का बिजनेस करते हो, ऐसा नहीं होगा कि मनीष मल्होत्रा आके अपना लहंगा फ्री में बेचने लग जाए। अगर मनीष मल्होत्रा अपना लहंगा फ्री में बेचने लगेगा तो आपसे कौन लहंगा खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, राइट। क्योंकि सब कहेंगे चलो मनीष मल्होत्रा फ्री में बेच रहा है, मैं आशा के लहंगे क्यों खरीदूंगा, राइट। सो बेसिकली दैट, वो मेंटेन करने के लिए कि ऐसा मार्केट में ना हो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया काम करती है। दैट इज व्हाट सीसीआई इज, ठीक है, कूल। पर्टिकुलर सेंसेक्स तो हम पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में भी पढ़ेंगे थोड़ा सेंसेक्स के बारे में, सो होल्ड वहां पे, थोड़ा पॉज रखो। चैप्टर 6 में सब कुछ पढ़ेंगे, स्पेशली ऑन सेंसेक्स, स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक्स क्या है, शेयर्स क्या है, बॉन्ड्स क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एफडीआई क्या होता है दोस्त? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसा, बाहर के देश से पैसा, राइट। यू ब्रिंग मनी फ्रॉम आउटसाइड, एंड दुबई का शेख इंडिया के किसी कंपनी में पैसा लगा दे, okay, that is FDI. So a sheikh in Saudi Arabia invests money in OYO. OYO जो अपना स्टार्टअप है उसमें आके पैसा लगा दे कोई अगर दुबई का शेख, तो दैट इज कॉल्ड FDI, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसा आ रहा है इंडिया में डायरेक्टली। देयर ओनली टू एक्सचेंजेस और स्टेट होते हैं बट बंद हो चुके हैं मानवी, सो वेरी देयर इज योर कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज है, एक दो और हैं, बट दे आर क्लोज, बहुत छोटे चलते हैं। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, आई थिंक चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज भी है, बट बहुत छोटे हैं, दे आर नॉट वेरी रेलेवेंट नाउ, राइट। ओके, let's get to the IRDI questions. तो repeat हो रहे हैं, what is CCI and when provide free telecom service, we'll come to that. That is a case in the court. Jio के ऊपर अभी भी केस चल रहा है वो फ्री में इंटरनेट देने का, so the job is being done there. Let's get to where we stopped in the last session, which is chapter number 5 में we were studying about organizations facilitating businesses.
वो ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस को फैसिलिटेट करती हैं, हेल्प करती हैं ग्रो करने में, काम करने में, टू डू देयर बिजनेसेस, राइट? वी स्टडीड अबाउट आरबीआई, SEBI and CCI, which are non-funding government institutions. Now we are learning about the fourth non-funding government institution, which is IRDAI, which is Insurance Regulatory and Development Authority of India. जैसे नाम से समझ आ रहा है, it is an organization which looks after the insurance business in India. Okay, insurance is something that is very, very important for at least a company like India, because there are uncertainties, the cost of medical, the cost of running a business, the cost of any like bad thing happens to your business or to yourself, you should essentially have an insurance to cover you. It is a little costly, but it saves you a lot of stress, right? So to regulate कि जो लोग प्रीमियम भर रहे हैं, their claims are being met in the right fashion, the insurance companies are not manipulating the customers, the insurance companies are registered. ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा उठा के आपको इंश्योरेंस दे देगा. No, any company who has to give insurance or provide insurance services to any kind of people, they need to be registered with IRDAI. They need to have a certificate of being an insurance company under the IRDAI. IRDAI फिर उनके ऊपर पूरा चेक रखता है. They ask for their statements, उनके डेटा मंगवाता है, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवाता है. It asks for information, उनके इंटरेस्ट रेट सेट करता है, प्रीमियम रेट सेट करता है. They gets into a discussion. It promotes them to give more insurance in rural or backward areas जहाँ पे लोगों को ज्यादा जरूरत है, to poorer segments, to rural segments, so that businesses go there. It gives help to insure businesses to insure their businesses, insure their stocks, right? अगर मान लो आप चांदनी चौक में जाते हो, बड़ा बाजार में जाते हो, you go to न्यू मार्केट इन भोपाल, किसी भी बड़ी मार्केट में जाते हो, there are big shopkeepers who have these fancy showrooms जिसमें कम से कम 5-7 करोड़ का माल रहता है. The stocks, they have stocks of 5 crore, 7 crore, 10 करोड़ का सामान पड़ा है उनकी दुकान में. आग लग जाएगी तो क्या होगा, चोरी हो जाएगी तो क्या होगा, अर्थक्वेक आ जाएगा तो क्या होगा. सो दे इंश्योर देयर स्टॉक्स कि अगर कुछ भी होता है, द इंश्योरेंस कंपनी विल कॉम्पनसेट फॉर मी, फॉर विच आई विल पे अ प्रीमियम एवरी ईयर. ठीक है, ये फायदा उठाने के लिए मुझे कुछ कॉस्ट आएगी, उसको प्रीमियम बोलते हैं. सो दैट इट्स मोर लाइक insurance companies betting on something not happening. Insurance companies always take a bet on something not happening. How do a simple concept से समझाता हूँ, how do insurance companies work or make money is very simple. There are 10 lakh people who come to you and take insurance. ठीक है, 10 लाख लोग हैं, सबको मैं कहता हूँ ठीक है मुझे 5,000 रुपए साल के दो, अगर आपको कुछ होता है मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा. Okay, you give me 5,000 every year. You give me 5,000 every year, right? And if anything happens to you, let's say health, car insurance है, अलग अलग टाइप की इंश्योरेंस है. हम एक एग्जांपल लेते हैं जनरल इंश्योरेंस की. 5,000 रुपए साल के दो, कुछ भी होता है आपको, मैं आपको 50 लाख रुपीस तक का क्लेम दूंगा. अप टू 50 लाख है, 50 लाख नहीं दूंगा. अगर 20 लाख खर्च होंगे तो 20 दूंगा, 10 लाख खर्च होंगे तो 10 लाख दूंगा, बट 50 लाख तक योर एक्सपेंसेस I will bear, for which give me 5,000 rupees per year, right, as a premium. Now you will feel awesome deal, बहुत सही है. अगर मैं 5,000 रुपए तो साल के देने हैं दोस्त, ठीक है, अगर 100 साल भी दूंगा तब जाके 5 लाख रुपए बनेंगे. 100 साल तक हर साल 5,000 रुपए देता रहूंगा तब भी सिर्फ मेरे 5 लाख रुपए बनेंगे. ये तो बहुत अच्छी डील है. सो पीपल टेक इंश्योरेंस. नाउ इंश्योरेंस कंपनी हैज 10 लाख कस्टमर्स. आई एम गिविंग एन एवरेज, करोड़ों में होते हैं उनके कस्टमर्स, राइट? देयर क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ पीपल. 150 करोड़ तो इंडिया में है दोस्त. सो अगर मैं कहता हूँ 10 लाख कस्टमर भी हैं, सबसे 5,000 रुपए भी ले रहे हैं, तो कितने करोड़ साल के हो गए मुझे बताओ. व्हाट इज देयर इनटेक ऑफ मनी, प्रीमियम इनकम, प्रीमियम से उनकी इनकम कितनी हो गई? 5,000 रुपए पर पर्सन. दे हैव 10 लाख कस्टमर्स. हाउ मच इज द प्रीमियम इनकम? एवरी ईयर बोल रहा हूँ दोस्त, एवरी ईयर. ये 750 करोड़ कैसे आए ईशान, मुझे बताओ. सिंपल मैथ्स है. 10 लाख को 5,000 से करेंगे, 5 का मल्टीपल होगा. 750 तो कैसे ही हो सकता है? 5 करोड़ कौन बोला दोस्त? 10 लाख इंटू 5,000.
चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, इतना नंबर तो आना चाहिए दोस्त, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। 5 करोड़ का कौन आया है? 50 लाख करोड़, ये नया आ गया, 50 लाख करोड़ हो गया दोस्त। सिंपल मैथ्स है। कितने करोड़ हुए दोस्त? 500 करोड़ हुए ना, 500 करोड़। सिंपल मैथ्स है, 500 करोड़ रुपए हो गए। 500 करोड़ रुपीज पर ईयर, पर ईयर दोस्त, पर ईयर। अब हर साल अगर 100 लोग आके भी मेरे से 50 लाख रुपए मांग लें, हर साल कह रहा हूं, I'm saying every year, 500 crores per year in the next 10 years, 5,000 करोड़ रुपए मेरे को प्रीमियम आ गया। अगले 10 साल में 5,000 करोड़ के क्लेम्स नहीं आएंगे, मुझे भी पता है। आई ऑल्सो नो इन द नेक्स्ट 10 years 5,000 करोड़ के क्लेम्स नहीं आने वाले। नाउ आई गेट 500 crores per year, आई इन्वेस्ट दिस 500 crores इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में पैसा डाल देते हैं लोग से प्रीमियम लेके इंश्योरेंस कंपनीज। 500 करोड़ पे 10% इंटरेस्ट भी कमाओ तो 50 करोड़ रुपए तो साल के इंटरेस्ट से कमा लेते हैं ये, हर साल, right? Now this, I'm just saying, when you have 10 lakh customers and they have customers in crores, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ customers हैं इनके पास, and the money is immense. The money is immense, right? So that is how these insurance companies work, and that is why we need an authority which is IRDAI to control so much money. आम आदमी का पैसा है, कहाँ लग रहा है, किसके पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऐसा ना हो ना कि मनी कलेक्ट करके इट्स बीइंग यूज्ड फॉर रॉन्ग थिंग्स, राइट? somebody needs to regulate that. So much amount of money from the general public, somebody needs to take control. Insurance Regulatory and Development Authority of India, right? 1,000 करोड़ों में, लाखों करोड़ों में पैसा है इंश्योरेंस कंपनीज के पास, because they're taking so much money, right? समझ आया इतना? Now let us understand about IRDAI के functions, करती क्या है, होता क्या है। Apex statutory body to regulate and develop insurance industry in India. Simple, we know that. It was constituted under Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999. ठीक है, सिंपल है, समझ गए। इसका भी एक एक्ट है 1999 का, समझ आ गया। IRDAI's role is to protect rights of policy holders. जिन्होंने प्रीमियम भरा है उनके राइट्स बचाओ, provide registration certificate to insurance companies, and responsible for renewal, modification, cancellation and suspension of these certificates. किसी कंपनी को रिन्यू करवाना है, किसी का कैंसिल करना है, किसी को बंद करना है, किसी पे ऑडिट करना है, सब कुछ IRDAI के पास कंट्रोल है, सब कुछ IRDAI has the power to do. Cool? Very good. Let's go to the mission of IRDAI. IRDAI करना क्या चाहती है? What does IRDAI want to do? उसको इतना बड़ा झमेला बनाया क्यों है? Number one, to protect the interest of and secure fair treatment of policy holders. आम आदमी जो प्रीमियम भर रहा है, the common man who is actually paying a premium for the insurance, their interests, their like they feel fair, उनके claims मिलेंगे, they are confident about insurance. ये सब insure करने के लिए there has to be IRDAI, and that is what IRDAI ensures. Number two, to bring about speedy and orderly growth of the insurance industry. It promotes insurance across the businesses. It promotes insurance across the business lines, across people, so that people go for insurance, so that people ensure, right, that insurance is taken, they are safe and sound, they have confidence, and the insurance industry grows. Right. Number three, to set, promote, monitor, enforce the standards of integrity, right? Which means धांधलेबाजी ना हो, scams ना हो, people have trust, people are scared ki, so insurance company has so much money, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ का पैसा पड़ा है उनके पास. They should be scared that somebody is keeping a check on me. I cannot just go and misuse this money. I cannot just go to Bahamas and enjoy with this money. This is the policy holder's money. Who can come and ask for claims? We cannot misuse the money. ये सब ensure करने के लिए there should be someone who keeps a check. That is IRDAI, दोस्त. Okay. Number four, to ensure speedy settlement. कोई आके claim करता है. If you have seen that movie of Paresh Rawal, oh my God, right? नहीं, ये मैं ऐसे exclaim नहीं कर रहा हूँ. This is a movie. If you have seen that movie, oh my God, that is where actually we're talking about the insurance industry, right?
क्लेम्स लेने लोग आते हैं बट क्लेम्स आर नॉट फुलफिल्ड। द इंश्योरेंस कंपनीज से कि नहीं आपका क्लेम तो ठीक नहीं है, क्लॉज ये नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट फिर से पढ़ो, आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये कवर नहीं था, हमने अप टू 50 लाख लिखा था, हम तो सिर्फ आपको 2 लाख दे सकते हैं, अप टू लिखा था 50, 100% तो कहीं नहीं लिखा था, हमने आपको सिर्फ 2 लाख रुपए देंगे। देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन दैट आर क्रिएटेड व्हेन यू गो फॉर अ क्लेम टू एन इंश्योरेंस कंपनी। सो IRDAI इंश्योर्स कि ऐसा ना हो रहा है, but it keeps a check. It's trying to solve these problems as India is growing, as the industry is growing, as people are becoming aware. You and me are studying so much on the internet. हमको रील्स में समझ आ जाता है काफी कुछ, फेसबुक पे जाते हो, इधर जाते, गूगल जाते हो, कहीं किसी दोस्त से सुन लेते हो. We have plethora of information at our disposal. हमें पता चल जाता है. We get to know a lot of stuff these days, so we are very aware. And that is what IRDA is also focusing on, that like they push awareness to the policy holders, the new policy holders like you and me. अगले 3-4 साल में when you start earning, you will also take insurance if you want to, right? And then you will have to understand insurance होता क्या है, किस किस टाइप का होता है, कितना पैसा देना पड़ता है, कौन सी महंगी है, कौन सी सस्ती है, right? policybazaar.com पे घूमते रहोगे, वहां से रोज फोन आएगा आपको, फिर परेशान कर देंगे आपको. Then point number 5, to take action where such standards are inadequate or inefficiently enforced, right? To take actions, that means insurance companies के ऊपर hunter भी चलाते हैं. They tell them this is not the right thing you're doing, this is something that you need to change, this is something that is not right, right? They keep telling them everything, they keep doing things which ensure that the industry as a whole is very neat, it's trustworthy, and the customers feel safe while doing business in the insurance industry. Right? Absolutely. Ustad has seen that movie, I think, by heart. The Act of God. That is what Paresh Rawal was fighting on, right? Awesome movie. If you get time, do watch that. Cool. Duties, power, and functions of IRDAI. The Act lays down the duties and powers, right? The authority shall have the duty to regulate, promote, and ensure orderly growth. दोस्त ये वाली जो line है ना, always write these lines in the examination. Make a note if you want to, take a screenshot if you want to, write it down if you want to. These kind of statements are the statements that you should use when you start writing your answers. Or essentially, I'm just giving, abhi to nahi, isme to MCQ hai aapka pura, but just a heads up as you go to intermediate, aap aage bhi to aur padhna sirf ye exam to exam nahi, aur bhi subjects hain. So what you should do essentially is, right, these kind of statements actually help you identify a question also. And when you do subjective subjects, aap jab intermediate mein karoge, whatever subjective subjects you're doing or giving an answer for, these kind of statements should be your starters, right? इसको अगर एग्जाम में से स्टार्ट करोगे, I can assure you 50% of the marks तो आपको यही मिल जाएंगे. Right? The authority shall have the duty to regulate, promote, and ensure orderly growth of the insurance business and reinsurance business in India. खत्म. 100%. आपको 5 मार्क का क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स तो आपको इसी पे मिल जाएंगे. Right? These are banger. These are really good statements that help you secure good marks in your examinations. So make sure whenever you're writing, ये एक example है. For every answer, for every concept, you will see कोई ना कोई एक underlying statement होती है, study material में दी होती है, starting में या कहीं बीच में एक बहुत अच्छी statement दी होती है. When you study or when you read that, आपको feel होता है कि हाँ ये अच्छी statement है, ये लिख सकते हैं. So start making notes for them. Right? It will help you. Cool. Duties पार के अंदर पढ़ते लंबा लंबा बहुत सारा लिखा हुआ है, but I'll just tell you in very short. You don't need to go into details. No one is going to ask you details. But very simple, duties, power, and functions होते क्या हैं? Okay. Number 1, issue to the applicant a certificate. Insurance company को certificate ये देते हैं. Protect the interest of the policy holder, हमने पढ़ लिया है. Specifying requisite qualifications, code of conduct, and practical training of the intermediary. Now, this is important. Insurance के आपने सुना होगा, there are insurance agents. There are people who work as insurance agents. Now, these agents cannot be anyone. आप और मैं एजेंट बन सकते हैं, बट वी नीड टू पास अ पेपर. एक क्वालिफिकेशन पेपर होता है. देयर इज एन एग्जामिनेशन टू बी एन इंश्योरेंस एजेंट, राइट? आपको वो एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है. वन टाइम एग्जामिनेशन पेपर होता है, छोटा सा होता है. इट्स नॉट अ वेरी हार्डकोर, इट्स मोर लाइक अ सर्टिफिकेशन कोर्स. आपको वो कंप्लीट करना पड़ता है, एंड देन यू आर सर्टिफाइड एज द इंश्योरेंस एजेंट अंडर द IRDAI. और जो आपको सर्टिफिकेट है वो IRDAI
से ही मिलता है. So these kinds of certificates are also given by IRDAI to the intermediaries, to the people who act as agents between the insurance company and the customer, saying कि हाँ आप ये वाली इंश्योरेंस लो या इस कंपनी की इंश्योरेंस लो. So those intermediaries are also qualified under a certification program from IRDAI. Right? Cool. See, Manvi, law is a tough subject. Okay, law में इतना theory होता है. I was the most scared with law. Law पढ़ने में बड़ा मजेदार लगता है. It's easy. Law is super easy because when you study, you कहाँ ये तो logic है. But when you have to write answers, it is a pain. Okay, I also relate to you. It's difficult to remember, but we don't have a choice. We have to learn. We have to remember some things. So we have to, right? उसको रोट लर्निंग नहीं बोलेंगे, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर थिंग्स, राइट. हर चीज ओपन बुक नहीं हो सकती, बट ठीक है, अभी जो है सो है. We all have to deal with some tough subjects, so that is where you will shine out against the competition, right? Cool. Let's go to the next one. Promoting and regulating professional organizations, which means every business, every other organization which is related to insurance companies or reinsurance businesses, they are also regulated and promoted by IRDAI, levying fees and other charges for carrying out purposes of the act. So every single, like, every chartered accountant, once they become a member, they have to pay a membership fee, right? हर साल a chartered accountant pays a membership fee to the Institute of Chartered Accountants of India. Similarly, every insurance companies pay a certificate or a membership amount to the IRDAI every year. That is what it's written here as well, right? Calling for information from undertaking inspection of conducting inquiries and investigation. That means insurance companies का audit भी IRDAI करती है, right? The intermediaries, insurance intermediaries के ऊपर audit करना है, कोई information मंगवानी है, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, what price are you charging, what is the premium that you're charging, all of that is done by IRDAI. Okay. To become an LIC agent, what are the qualifications? Sami, you can go and Google that. I'm not an expert on that. Very open-ended question. Focus on the syllabus, right? Okay. Control and regulation of the rates, advantages, terms, and conditions that may be offered by insurers. Okay. They control and regulate the rate. That was I'm saying. Interest rate kya hai? Premium rate kya hai? What are the advantages in terms and conditions that may be offered by insurers, right? That is also controlled and regulated by IRDAI, specifying the form and manner in which books of accounts shall be maintained, regulating investment of funds by insurance companies. अभी आपको बता रहा था, अपने 5,000 करोड़ रुपए मार्केट्स में डाल रहे हैं, शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, एफडी में डाल रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, all of that is regulated by the IRDAI, right? Last one is regulating maintenance of margin of solvency, right? इसके बाद भी है, but margin of solvency क्या होता है? Let me ask you this question, and I know we have studied this in 11th and 12th. We have studied margin of solvency. I am pretty sure हम सब ने पढ़ा हुआ है margin of solvency even before chartered accountancy. Let me see who remembers what is margin of solvency. I'm giving you a hint, हमने पढ़ा हुआ है, सब ने पढ़ा हुआ है. What is margin of solvency? No one is answering. Why? We have studied what is margin of solvency, दोस्त. Economics में पढ़ा हुआ है मैंने तो. I have studied in economics. I don't know how, but I have studied margin of solvency. Questions भी solve किए हैं दोस्त margin of solvency के हमने 11th 12th में. Margin of solvency का तो हमने question भी I still remember. We have solved questions also of margins of solvency. Particular limit at which a person doesn't become insolvent. Okay. What else? How much margin to keep between claim, extra capital a company must hold, solvency ratio, asset in liquid form, excess of assets over liabilities. That is what margin of solvency is, right? Who are the person who are capable of taking insurance? No.
Margin is to be kept with the company so that the when insured person come to get the money. Exactly दोस्त. SLR CRR याद है? SLR CRR याद है कि कुछ पैसा तो आपको लिक्विड फॉर्म में रखना ही पड़ेगा. कोई आ गया पैसे मांगने तो कहां से दोगे दोस्त? That is margin of solvency. If you have 500 crores of premium collection, ठीक है, you cannot just go and invest that entire money in the share market. You have to keep certain amount of money with you, because what if people come back and ask for claims? What if people come back and tell you, give me my claim, this is a problem I have, this is something that happened with me, give me my 10 lakhs, give me my 20 lakhs. The company should have certain amount of money to claim, to give out as claims. Sare paise invest, they should not block their entire capital. And that is what margin of solvency in the simplest form means. Cool. Surya, you're from UP board, you chose maths and not economics. दोस्त मजा आता है इकोनॉमिक्स पढ़ते तो, बट कोई बात नहीं, आज पढ़ लिया. राइट? वेरी सिंपल. Supervising the functioning of tariff advisory committee, पढ़ने की जरूरत नहीं है, not a very technical thing, सब्जेक्ट लेवल पे दिया हुआ है. Specifying the percentage of life insurance business and general insurance business to be undertaken by insurer in rural and social sector. बता चुका हूं मैं आपको. राइट? दे प्रमोट सेइंग कि आउट ऑफ योर टोटल बिजनेस 10% आप रूरल एरियाज में करो, 20% आप इस एरिया में करो, नॉर्थ ईस्ट में करो, गुजरात में करो, बैकवर्ड एरियाज में करो, एसईजीज में करो. सो ऑल दोस काइंड्स ऑफ प्रमोशन दैट दे वांट द कंपनी टू डू एट अ सर्टेन एरिया जहां पे बिजनेस प्रमोट हो, जहां पे इट हेल्प्स द अंडर प्रिविलेज्ड और हेल्प्स अ लिटिल पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी. वो उनको पुश करते कि वहां जाके बिजनेस करो. Lastly, exercising such other powers as may be prescribed. Anything which may be prescribed in the act is also to be done by IRDAI. IRDAI has to also do anything that is prescribed in the act for it to do. Cool? Okay. Now, any questions so far? पहले questions देख लेते हैं, कोई doubt या question है, and then we'll go to the other topic. How does IRDAI facilitate a business or businesses in India? Right? पहले ये समझते हैं कि आपको कोई doubt या question है, and then we'll go to understand how does IRDAI facilitates a business in India. Okay. Cool. As other company does with their reserves, put some in secure investment. That is right. That is right. It is also a company. It also has to make money. So they also invest that money there. Any questions, any doubts, or we can go to the next one. That's right, Surya. Probably maths तो important है. I'm not saying maths is not important, but I just said if you have taken economics, मजा आता पढ़ने में. But ठीक है. Now you have economics here as well, so you will get a taste and flavor of economics as well now. Not an issue. परेशान होने की कोई बात नहीं है दोस्त. Should we remember the year in which acts came? हाँ, if you can, it's good. If you can, it's good. Okay. If you can remember the dates, it's always good. If you cannot, आपको लगता है यार नहीं मुझे तो नहीं समझ आ रहा, मुझसे याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, याद कर लो, आ सकता है. मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी क्या है फैजान? हमने 10 लाख लोगों से 5,000 रुपए लिए, 500 करोड़ करेक्ट कर लिए. ये सारे पैसे वी शुड नॉट इन्वेस्ट और पुट दैट मनी इन एन इन्वेस्टमेंट. वी शुड कीप सर्टेन मनी in liquid form in the company so that if people come to ask for claim, वो claim कर ले कि यार मेरे को मेरे इंश्योरेंस का पैसा दो, मेरे साथ ये हो गया, मेरी दुकान जल गई है, मैं यहाँ हो गया, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, मुझे पैसे दो मेरे. So the company should keep a margin of solvency. थोड़ा मार्जिन रखना चाहिए उस 500 करोड़ में से. अपने 15-20 करोड़ रुपए उसको अपने पास कैश में रखने चाहिए, बैंक में रखने चाहिए टू गिव आउट एज क्लेम्स. दैट इज मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी. ठीक है. Is IRDAI only facilitate insurance companies? Yes, Keshav. IRDAI का फुल फॉर्म एक बार फिर से पढ़ो क्या है.
How much capital is required to insurance company? Not very sure on the number, but a lot of capital. LIC is an insurance company with separate act. It's a government's insurance company, उसका separate act बना देते हैं वो लोग. It comes under IRDI for sure. IRDI उसके ऊपर भी आता है. Okay. Business include accountancy and economics. ये कहाँ से आया समीर? Business include accountancy and economics. किधर की बात कर रहे हैं दोस्त? What is levying fee? चार्ज करता है, फीस चार्ज करने को लेविंग फी बोलते हैं सर. ओके. मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी CRR ऑफ IRDI, दैट इज राइट भूमिका, एब्सोल्युटली द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग. Cool. Okay. Perfect. Let's go to the next topic, which is how does IRDI facilitates businesses? Number one, it is regulating and developing the insurance industry in the country. How does it help? It protects the interest of the insurance policy holders, creates confidence amongst the business owners, the businesses कि हम अपना stock, अपना business insure कर सकते हैं. I can insure my business because I have confidence, because there is IRDI. So मेरे साथ कोई scam नहीं होगा. I can go and claim my money, and if my claim is not accepted, I can go and put a complaint in IRDI, which will then help me. This is how it facilitates. It disseminates a lot of information for the benefit of the policy holders. Disseminates means spreads, shares, makes people aware of all the information and benefits of insurance from time to time through different media forums, through radio ads, TV ad, धोनी से ad करवाई, अपना अमिताभ बच्चन से ad करवाई, सचिन तेंदुलकर से ads. All these government organizations, all these government facilitating organizations ad करवाती हैं. आप KBC देखते हो, KBC के अंदर बार बार अमिताभ बच्चन से RBI कहता है. Why is RBI doing advertisement on KBC? It does not have to, right? SEBI की ad आती है, mutual fund सही है. SEBI is promoting that ad that mutual fund सही है. Why are they doing that, right? Everything that you see on the television वो book से related है. वो बस real life में हो रहा है, but you don't understand कि वो हो रहा है क्योंकि हमने पढ़ा नहीं हुआ है. But now that you have studied this, कि अच्छा इसीलिए म्यूचुअल फंड सही है, प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज सेबी सेज go by the right people, go by the registered people. खुले आम शेयर मार्केट में पैसा मत लगाओ, it is risky. It is educating people. Hard earned money अपना गवा के मत stress में आना. Take corrective measures, take wise decisions. That is what the job of these organizations is, to do advertisement on television, through stars, through different media forums, internet पे, इससे वहां से pamphlets, radio show, talk show होता रहता है, right? Similarly, IRDI also does that. It awares people, it approaches the आजकल social media influencers, it approaches the right people, it approaches different government organizations, radios, news channels, game shows कि आप IRDI का promote करो, that people do not get scammed. They should only take insurance from registered companies. They should only pay premium to registered people. They should only get in contact with the registered agents of insurance companies. कोई भी आके आपको बोले मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं, मुझे 10,000 रुपए दे दो, मैं आपकी इंश्योरेंस करवा देता हूँ, मिलेगा भी नहीं कल परसों दोस्तों, पैसा लेके भाग जाएगा आपका. इस सब की अवेयरनेस के लिए यू एंड मी माइट बी स्मार्ट, यू एंड मी माइट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. सम पीपल इन टायर 3 टायर 4 आपका नहीं समझ पाएंगे. रूरल एरिया में लोग ये सब नहीं समझ पाएंगे, राइट? कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे होती है, क्या करना है, वहां पे बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं. So to create that kind of confidence, to create that environment, to facilitate all of this, IRDI की वो duty है, and that is how it facilitates the businesses. Correct? That is right. Now, second gear of the chapter, दोस्त. अभी तक हम पढ़ रहे थे नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में, इंस्टीट्यूशंस विच आर नॉट गिविंग आउट मनी टू द बिजनेसेस, राइट? इंस्टीट्यूशंस विच आर नॉट गिविंग आउट मनी टू द बिजनेसेस, उनको हम बोलते हैं नॉन फंडिंग organizations or non-funding institutions like RBI, SEBI, CCI, IRDI. ये एक environment बना रहे हैं अच्छे business का, ये पैसा नहीं दे रहे हैं.
but there are institutions of the government which are actually giving out money, to the businesses to support them, to facilitate them, to help them do their business. These are called funding government institutions. इसमें हम एक ही एग्जाम्पल लेंगे which is NABARD का. इस सिलेबस के लिए we will only take an example of NABARD, but we will also study छोटा छोटा about other how did NABARD come into picture, वो समझेंगे. NABARD का full form is there on your screen, which is National Bank for Agriculture and Rural Development. It is a national bank for agriculture and rural development, dost. Right now, development bank. NABARD is a development bank. Okay, it's a national bank for agriculture and rural development. इसको बोलते हैं development bank. ठीक है, there is a kind of banks which are development banks. These are development banks. In development banks का difference from a commercial bank क्या होता है? Please explain that to me. How is a development bank different from a commercial bank जैसे HDFC, जैसे ICICI बैंक? इन सबसे डेवलपमेंट बैंक्स अलग कैसे होते हैं? टेक अ गेस. जरूरी नहीं है सही आंसर देना, अपना गेस वर्क करो. इफ यू नो दैट्स गुड, इफ यू डू नॉट टेक अ गेस यू विल लर्न समथिंग न्यू टुडे. राइट, गेस करो कि क्या फर्क होगा. And if it's right or wrong, we don't care. अगले 2 मिनट में हम समझ ही लेंगे क्या होता है. But take a guess, try to answer that question, and you will learn something new today. What is the difference between a development bank and a commercial bank? जैसे HDFC ICICI एक commercial bank है, NABARD एक development bank है. इसमें फर्क क्या है? Major फर्क क्या है इसमें? Okay, Samir, got it. What you were saying, understood. Okay. They give loan or lower interest rate with less or minimal documentation, Manvi. Good try, Manvi. Let's see what others have to say, okay? SIDBI and Startup India come under funding institutions. Keshav, will come to that. That is not the right answer, but we'll, good question. I'm happy that you guys are curious, okay? The question is, Saima, difference between a development bank and a commercial bank like HDFC or ICICI. Okay, development banks promote a special thing or cause. Interest rates are lower than the commercial bank. They don't take deposits. Commercial bank provides high rate of interest. It does not open account of general public. Development bank invest money for development of economy. Okay, very good. Which type of question coming in exam from this chapter? All type of question, Asha. Commercial may profit earning and development may welfare. Okay, commercial banks do not promote too much development of agriculture, but NABARD does. The difference, Rohan is asked between commercial and development, not NABARD and development, right? Maybe for the farmers, I'm not talking about NABARD. I'm talking about development banks. Those NABARD is just an example of a development bank. Okay, something. I'm happy that the answers are wrong, and that's great. You're going to learn something very new today. ठीक है, खुश हो उसकी बारे में कि आज कुछ नया पढ़ने वाले हो अगले 2 मिनट में. Development banks are the development of society and indirect development of the nation. Okay, development banks help rural areas, not necessarily, but okay, good try. Development bank is a national bank which promotes business loan and investment in business. वो तो commercial bank भी करता है दोस्त. Development bank does not take deposit, तो फिर पैसा कहाँ से आता है? Fund for farmer and for development of rural area of at rural interest. अच्छा ठीक है. NABARD bank financial communities and commercial bank interest loan नहीं. Okay, commercial bank are those banks which give loan to startups for start to any business. वो तो development bank भी करता है दोस्त. Development banks majorly work to provide benefit for development of overall economy. More or so, yes. Cool. Very good. Good try. Good try, everyone. Some of the points were right. Some of the points were not. But let me explain you with a very simple example. Listen to this carefully. For life, the concept will be clear. There are commercial banks and there are development banks. Commercial bank हो गया HDFC, ICICI, SBI, Punjab National, Canada Bank, XYZ. ये सब commercial banks है जहाँ पे you and me
where you and me can go and deposit our money, go and put our money, savings account खुलवा सकते हैं, current account खुलवा सकते हैं, FD करवा सकते हैं, PPF account खुलवा सकते हैं, credit card मिलता है, debit card मिलता है, net banking मिलती है, ATM card मिलता है, ATM access मिलता है. ये सब commercial banks हैं. All of these are commercial banks. A development bank is a bank which gets money from the RBI. General public like you and me cannot open an account. No one can open an account in these banks. ये बैंक तो है, but इसके अंदर accounts नहीं होते. There are no accounts in these banks. These are just there to promote development of a specific sector of an economy. Okay. For example, NABARD एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए एक बैंक बनाया गया है. बैंक क्यों बोलते हैं इसको? Why is it called a bank? Because it gives out loans to businesses, to people. It gives out loans and money to people. It is a funding organization, दोस्त. It is a funding institution of the government. ये पैसा बांटता है. It gives money to the businesses, to institutions, to small business women, to small businessmen, to small owners, to small communities of women in rural areas, to startups, to female entrepreneurs, to male entrepreneurs. इन सबको पैसा देने के लिए डेवलपमेंट बैंक्स बनाए गए हैं. इसमें कोई पैसा जमा नहीं करता है. आरबीआई इसको पैसा देता है और ये आगे जाके लोन्स बांटते हैं. अब इसको बैंक क्यों बनाया गया? Why is it so relevant? Because their job is very critical. Okay, why is their job so critical? Because they have to identify. A development bank has to identify the right people who need loans. Who need loan, वो लोग ढूंढना इसका काम है और जाके उनको लोन देना. Because and creating an awareness, creating schemes of the government so that people get aware कि हाँ सरकार is there to help you. NABARD agriculture में करता है. There is something called SIDBI. There is IDBI Bank, Investment Development, right? Industrial Development Bank of India करके होता पहले, right? So industries को develop करने के लिए है. SIDBI है, Small Industry Development Bank of India, right? Small industries को develop करने के लिए एक development bank है, right? All of these development banks get money from the RBI. अच्छा, very good. अब मुझे बताओ RBI के पास पैसा कैसे आता है दोस्त? हम पढ़ चुके हैं आरबीआई के अंदर. आरबीआई के पास पैसा कैसे आता है? बिकॉज हमने पढ़ा था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. द बैंक्स गो एंड डिपॉजिट मनी विद द आरबीआई. कमर्शियल बैंक हमसे पैसा लेता है. कमर्शियल बैंक हमसे पैसा लेता है और हमसे पैसे लेके सेविंग्स अकाउंट में रख देता है. There is SLR CRR. SLR says, let's say 20% of the money you have to keep, rest all you can give out as loans. Now the commercial bank says, cool, 20% मैंने SLR रख दिया. किसके पास रखा दोस्त? RBI के पास रखा. The SLR and CRR का पैसा RBI के पास डिपॉजिट करवा दिया जाता है. SLR and CRR डिपॉजिट के आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा दिया जाता है जिसके ऊपर दे गेट रेपो रेट. ओके, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमी. SLR and CRR, which is to be kept by a commercial bank, that is deposited in RBI. ये बड़े बड़े HDFC बैंक, ICICI बैंक जाके RBI में अपना पैसा डिपॉजिट कर देते हैं कि ये लो हमारा SLR CRR आप रख लो. RBI कहते ठीक है, उसके ऊपर दे गेट रेपो रेट. आरबीआई के पास इन बैंक से करोड़ों रुपए आ गए. आरबीआई गेट्स crores and crores of rupees from these banks in form of SLR and CRR. This money is then given to development banks. ये पैसा उठा के development banks को दिया जाता है to give out as loans in priority sectors. They are the development banks: rural development, industry development, small industry development, medical care development, XYZ. जो भी development bank का focus area है वहां पे वो जाके सस्ते लोन्स देते हैं. फ्री लोन नहीं देते हैं, सस्ते लोन देते हैं. आप एचडीएफसी से लोन लोगे 8% इंटरेस्ट. इफ नाबार्ड गोज एंड गिव्स एन इंटरेस्ट टू अ फार्मर और अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स,
maybe 2.5 3% maximum they will charge as interest, and if they're not able to repay, वो भी माफ कर देते हैं, कोई बात नहीं, रहने दो, मत दो। अब फिर आप कहोगे फिर पैसा कहां से आता है? टैक्स। द गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग टैक्स, एजुकेशन सेस, कृषि कल्याण सेस, टैक्स, हमसे टैक्स से जो पैसा आता है वो भी डेवलपमेंट बैंक्स को दिया जाता है, राइट? अ पोर्शन ऑफ टैक्स कलेक्शन इज आल्सो गिवन टू डेवलपमेंट बैंक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इसलिए इनको बोलते हैं दोस्त डेवलपमेंट बैंक। A NABARD gives loans directly? Yes, it does. If you read the report, NABARD gives almost 21,000 crore rupees every year to Northeast ki seven sisters. The seven sister states of Northeast get around 21,000 crores from NABARD every year. राइट, स्मॉल इंडस्ट्रीज, फार्मर्स, ताकि रोड बन जाए, वहां पे फार्मिंग हो जाए, दे प्रोटेक्ट दीज। नाउ आउट ऑफ सिलेबस आई एम टेलिंग यू जस्ट फॉर योर नॉलेज, why do you think NABARD is spending so much money in Northeast? Let me see how many of you are aware of your country's dynamics, how many of you understand your country as well. सिर्फ 4 दीवारों में 5 रील्स को लाइक करने से देखते हैं कौन बाहर है। Why do you think NABARD is so focused on development of northeastern states of India? देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। Which is out of syllabus, okay? I'm just giving you a call out. This is out of syllabus, which I think is an interesting topic. And you guys being now in out of school, getting into a different zone altogether, let's see how many of you are aware of this. Why do you think NABARD is investing so much money in northeastern states of India? क्यों करता होगा? Exactly. I've got my right answer. Underdeveloped states for development. Since those states are more agriculture, they need more development. Okay. Because of attacks due to China, Devesh, absolutely right. Our seven sisters, the seven sister states, have the conjoining borders with China. उनके borders China से लगते हैं, and you and me know China. To protect, China is investing a lot of money in Northeast. Okay, बहुत ज़्यादा push करती है. If you ever read news, China keeps on giving offers and development offers to Northeast states, right? Which they are not accepting because they're part of India. But to protect the interests of the people of the country, बहुत ज्यादा पैसा वहां पे फ्लश किया जाता है, so that we protect our borders, because China is constantly pushing Northeast को अपने अंदर लेने के लिए, right? And we have to be very vigilant there. We have to develop those states so that those states are protected by those attacks by China, right? Essentially इसमें NABARD काम करता है। अभी आप समझो कि कितना important काम है डेवलपमेंट बैंक्स का। It is not just हाँ ठीक है गरीबों की सेवा करनी है, देश को आगे बढ़ाना है। नो दोस्त, इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक वर्क दैट डेवलपमेंट बैंक्स डू। बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी जाती है इसमें, बहुत ज्यादा आईएएस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी, मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री, एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट बैंक्स, right? If you go to Chhattisgarh mein there are a lot of naxal like active area in Chhattisgarh. वहां पे NABARD का बहुत ज्यादा काम है। NABARD is giving out a lot of monetary benefit to people in those areas because wahan pe dikkat hai, there are problems, and this is what a development bank is there for, right? To develop those areas where there are problems, where there are issues, wahan pe paisa lagna chahiye. So this is what development banks do. Cool. Okay. Heavy rain, that is right. Thoda topography ka bhi hai issue, but it's more about the geopolitical stress that we have in those areas, right? That is right, Avinash. Like Bastar area है, वहां पे आप देखोगे NABARD का बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट चलता है वहां पे। हाँ, that is right. हरनूर से चाइना वाला का तो अलग बिग बॉस चल रहा है। What do you mean? Their PM is Abdu Rozik. उनका क्या PM को आप अब्दू बोल रहे हो? Cool. Let's go to understand about NABARD.
ओके थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में पढ़ते हैं, डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ते हैं. डेवलपमेंट बैंक्स, दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड फंड्स and financial assistance to new and upcoming business enterprises. Development banks are distinguishable from commercial banks. How? They do not accept deposits. They draw their resources from the government and other promoting agencies. Means RBI, business facilitates kept SLR and CRR from the banking sector. These funds are placed with the development bank so they can use them for funding agents for development of the nation. ये मैंने आपको पढ़ाया है, वही स्लाइड में लिखा है, which I have already uploaded, I think chapter number 5. You can go and refer these PPTs for your revision purpose, right? ये हमने पढ़ लिया है. Now, in India, the genesis of development banks के बारे में पढ़ते हैं. बड़ा interesting topic है कि some of the most famous development banks in India के बारे में पढ़ते हैं. देखो, IFCI, Industrial Finance Corporation of India, 1948 में was a development bank. It has now been converted to a commercial bank like HDFC, ICICI. Industrial Credit and Investment Corporation of India, those ICICI, Industrial Credit and Investment Corporation of India, 1955 में उसको बनाया गया था as a development bank. Now it is a commercial bank. You all know, and you know that it's now a commercial bank which we have accounts and you have credit card, debit card. फ्लिपकार्ट पे खरीदने जाओ, अमेज़न पे खरीदने जाओ, आईसीआईसी का क्रेडिट कार्ड लगता है, राइट? इट इज नाउ अ कमर्शियल बैंक, बट इट स्टार्टेड एज अ डेवलपमेंट बैंक. नाम से ही समझ आ रहा है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई. Next was IDBI, Industrial Development Bank of India, right? It is the only industrial development bank in India at the present. IDBI, Industrial Development Bank of India, is the only development bank, industrial development bank in India at present. The Small Industries Development Bank of India, which is SIDBI, Small Industries Development Bank of India, which was a part of IDBI, उसको अलग करके small industries के लिए बना दिया. And we are going to study about NABARD, the National Bank for Agriculture and Rural Development. Cool? Super cool. Okay, what is NABARD? NABARD is the apex development bank in India. It is the biggest development bank in India, headquartered at Mumbai with branches all over India. The bank has been entrusted with what? Matters concerning to policy, planning, operations in the field of credit for agriculture and other economic activities in the rural areas, right? Most important institutions which look after development of the cottage industry, NABARD रूरल एरियाज में तो काम करता ही है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए तो काम करता ही है, but it also ensures the development of cottage industries, small industries, village industries, and other rural industries. Okay. Now, it takes measures towards improving the credit delivery system in the rural areas by rehabilitation schemes, restructuring of credit institutions, training of personnel. It does also help. अब और कैसे हेल्प करते हैं नाबार्ड? यहाँ पे लिख रहे हैं रिहैबिलिटेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस. एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? देयर इज अ फार्मर मिस्टर एक्स, ठीक है? देयर इज अ फार्मर मिस्टर एक्स जिन्होंने लोन लिया फ्रॉम लेट्स से अ वेरी लोकल बैंक, वहां के किसी लोकल बैंक से, मान लेते हैं धन सेवा एग्रीकल्चर बैंक करके एक बैंक खुला हुआ है इन समवेयर इन अ विलेज, लेट्स से इन नियर बैंगलोर, ठीक है? बैंगलोर से 200 किलोमीटर दूर कर्नाटका में उन्होंने एक लोकल बैंक धन सेवा एग्रीकल्चर बैंक से लोन ले लिया. दैट बैंक इज चार्जिंग 15% इंटरेस्ट रेट, और इन फार्मर को जरूरत थी पैसे की, इन्होंने पैसे ले लिए. Now this farmer is not able to pay the loan back. पैसा दे ही नहीं पा रहे हैं, 15% इंटरेस्ट दे नहीं पा रहे हैं. So NABARD identifies such individuals. It reaches out to big NGOs. It reaches out to big institutions. Data collect करती है, then identifies कि अच्छा, these are the 10,000. These are the 1 lakh farmers who need my help in Karnataka. Then it goes and tells them no problem. आपका लोन मैं भर दूंगा.
राइट? नाबार्ड गोज एंड टेल्स देम आपका लोन हम भरेंगे, आप टेंशन मत लो, हम आपका लोन भर देंगे और हम आपसे सिर्फ 2% इंटरेस्ट लेंगे। फ्री नहीं देते हैं दोस्त, फ्री नहीं देते, कभी कभी फ्री भी देते हैं, डिपेंड्स ऑन द केस, बट एसेंशियली व्हाट दे डू इज उनका 5 लाख रुपए का लोन, द 5 lakh loan that farmer had at 15%, they paid the 5 lakh rupees to the local bank और नाउ दे गेव हिम 2% इंटरेस्ट पे लोन, कि ठीक है अब आप 5 लाख रुपए मेरे से ले लो और सिर्फ 2% इंटरेस्ट देना, उसका लोन मैं 5 लाख रुपए मैं भर देता हूँ। दिस इज कॉल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। ओके, दिस इज कॉल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस by helping the rural areas, creating a development opportunity ताकि वो smoothly business कर सकें अपना, right? It undertakes monitoring and evaluation of projects refinance, loan for loan, जो कि मैं आपको बता रहा था अभी। It also does for businesses, small rural businesses, small rural industries, जहाँ चावल प्रोसेस हो रहा है, आटा प्रोसेस हो रहा है, दालें प्रोसेस हो रही हैं, all the pulses are being processed, small industries, उनको जाके भी हेल्प करता है नाबार्ड। इट इज नॉट जस्ट द फार्मर्स, रूरल सेक्टर हैज सो मेनी पीपल, सो मेनी बिजनेसेस, कैटल है, लोगों के पास 100 गायें हैं, 50 बकरियां हैं, दे all this comes under rural, right? Like the people are making sugar cane, producing this, producing आलू, प्याज, टमाटर, कितना कुछ बन रहा है दोस्त, नमक बन रहा है, खाना बन रहा है, पान, हर चीज बन रही है, राइट? whatever you eat, you drink, everything is agriculture। कितना सारा बिजनेस है, थिंग्स आर, फ्रूट्स आ रहे हैं, पैक होके आ रहे हैं, ऑल दीज आर इंडस्ट्रीज, रूरल इंडस्ट्रीज, राइट? इन सबको हेल्प करना है नाबार्ड को। इट इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। इनके लिए 5 लाख करोड़ इज ऑल्सो अ स्मॉल अमाउंट, आई कैन टेल यू। 5 लाख करोड़ रुपए भी नाबार्ड के लिए छोटी अमाउंट है, इतना बड़ा डेवलपमेंट बैंक है नाबार्ड। ओके, नाउ let's go to the last one, which says NABARD keeps a check on client institutes, development of institutions. It sensitizes banks, provides training facilities to bank personnel because जाके उनको farmers को identify करना है, right? It regulates the institutions, regulates the cooperative banks and RRBs, which is regional rural banks. आरआरबी मतलब छोटे छोटे, नाबार्ड ने अपने छोटे छोटे बैंक्स और आगे अपनी ब्रांचेस खोली हुई हैं, उनको रेगुलेट करता है, राइट? NABARD also regulates its small little branches it has in different states, different villages, which are called regional rural banks. It regulates them, helps promote them, right? Village industries, Himanshu, like I was telling you, यही दाल चावल प्रोसेस हो रहा है। आपकी दाल आपको ऐसे हाथ में मुट्ठी में तो नहीं मिलती है, पैकेट में आती है दाल आपके, राइट? दैट इज विलेज इंडस्ट्री। फ्रूट आता है, फ्रूट के ऊपर स्टिकर्स लगे होते हैं, केले आते हैं, केले के ऊपर स्टिकर लगा होता है, एप्पल के ऊपर स्टिकर लगा होता है, राइट? धुल के आता है, पपीता पूरा आपको प्रोसेस्ड आता है, राइट? आपके घर में जो फ्रूट आ रहा है वो रॉ नहीं है दोस्त, इट हैज बीन प्रोसेस्ड, दोज आर विलेज इंडस्ट्रीज। ओके, फर्टिलाइजर्स है दोस्त, मिट्टी, सीड्स, पानी, चावल, आटा, पाइप, पंपिंग, ट्यूबवेल, दो सब विलेज इंडस्ट्रीज है, सब कुछ विलेज इंडस्ट्रीज है। कितना काम है उधर, राइट? बहुत काम है, विच इज जस्ट इन, वी वर्क इन साइलो, सो दिखता नहीं है कि कितना काम है, बट एग्रीकल्चर में दोस्त बेइंतहा काम है, राइट? एंड देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस देयर। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्लाइड with a lot of data points for you, but घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है दोस्त, ठीक है? बहुत सिंपल है। NABARD refinance is available to state cooperative banks, state cooperative agriculture and rural development banks, commercial banks and other financial institutions approved by RBI. जो ये रीफाइनेंसिंग करते हैं ना दोस्त, राइट? जो ये रीफाइनेंसिंग करते हैं ये हर बैंक के साथ करते हैं। It can do these refinancing with small regional rural banks, with commercial banks, with other commercial banks and small rural regional rural development banks. सबके साथ refinancing करते हैं ये लोग। Okay, NABARD is also known as its SHG bank linkage program. अच्छा, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में पढ़ा हुआ है। It is like a kitty party of village women and men. ये लोग क्या होते हैं, 20-30 people come together,
दे पूल मनी, जिसको पैसा चाहिए होता है वो ले लेता है, नेक्स्ट महीने कोई और वो पैसा ले लेता है, राइट? सो एवरी मंथ यू कम एंड यू गिव 100 rupees, there are 30 people, so you it becomes 3,000 rupees, right? 3,000 rupees, फिर एक one person says this month I need 3,000 rupees, he or she takes that 3,000 rupees. Next month everyone again comes together, हर कोई 100 रुपए डालता है, someone else says कि I want this money, I will take this 3,000 rupees, people say okay you take this 3,000 rupees. ऐसे करते करते they help together, आपका पैसा आपके पास वापस आ जाता है, आप हर बारी 100 रुपए डाल रहे हो for 30 times and one day you will get that 3,000 rupees back जब आपको जरूरत हो. This is called self-help groups. They are helping each other by pooling in the money. That money becomes a loan amount which they give interest-free or at a very small interest rate to that particular person in the self-help group. NABARD also helps these small self-help groups in villages. इतने core level तक जाता है NABARD. Okay. Now, NABARD also has a portfolio of watershed development, tribal development, and farm innovation, right? Industries or businesses which are working in watershed development, tribal area development, दोस्त वहां भी नाबार्ड है. फार्म इनोवेशन हो रही है, कुछ इनोवेशन हो रहा है फार्मिंग में, उनको भी पैसा देते हैं, उनको भी प्रमोट करता है नाबार्ड. कितना काम है दोस्त इसके पास, पता नहीं इतना काम करता कैसे है, right? Watershed development, tribal development, farm innovation, self-help group, refinancing, RRBs, SKRDBs, rural banks के साथ करना है, agriculture देखना है, rural development of country like India, which is a peninsula, 3 sides water, landlocked on the top, hills on the top, desert on the in the west, now hilly areas in the east, water in the south. इंडिया के पास दो सब कुछ है. एंड दीज काइंड ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इज हाउ दे स्ट्रेटेजाइज. कहीं की मिट्टी पे कुछ उगता है, कहीं की खेती में कुछ उगता है, right? They have to go and support all these people, farmer, businesses, industries, and that is why it is a funding institution of the government which facilitates businesses by giving out money, right? स्वाति's क्वेश्चन इज क्या नाबार्ड जैसा बैंक यूएस में भी है? स्वाति यूएस जाऊंगा तो पक्का ढूंढ के बताऊंगा. अभी तो आई डोंट नो इफ देयर इज एनीथिंग. होगा जरूर, देयर विल बी समथिंग. आई एम नॉट श्योर उसको बोलते क्या है. एब्सोल्युटली पर्टिकुलर, लाइक अ कमिटी दैट यू हैव, राइट? कमिटी डालते हैं लोग, एग्जैक्टली दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप. हाँ, एवरीबॉडी नोज कमिटी. गलत चीजें सीखो सब लोग, सब जुआ और सब गैम्बलिंग सीख रहे हैं, पढ़ाई किसी को नहीं करनी है. फैजान से बिस्सी कहते हो, ये सब लोग सब जुआ तो सबसे खिलवा लो, पढ़ाई नहीं हो रही है एकदम. In real, do they provide services correctly as India has more corruption? Jay, they do. Okay. See, some level of disruption to har jagah hoga, but majorly they do provide the kind of services or what they claim to do. NABARD is doing a great job. I had an opportunity to go for an audit of NABARD during my articleship, so I have seen NABARD very closely. ठीक है, they do work. तभी बता रहा हूँ 5 लाख करोड़ भी उनके लिए छोटी अमाउंट है. I have done a small audit of NABARD, so I know about NABARD थोड़ा सा. सूर्य अभी तो सिर्फ इंडिया ही घूमा है दोस्त, जल्दी बाहर भी जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं. थोड़ी सी सेविंग्स हो जाए फिर पक्का बाहर जाएंगे. Cool. Question on the screen, boys and girls. Next 5 minutes, let's focus on some 3-4 questions from this chapter, and with that अपना chapter number 5 भी खत्म हो जाएगा दोस्त. सोचो कितनी बढ़िया बात है, right? Question on the screen. Let us read the question carefully and answer. Question on the screen. Please read it carefully and let me know your answer. Self-help groups has a member like farmer and small industry. It does. It can. Basically, ये बहुत ही poor segment of farmers do that essentially, but it depends.
मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट संचिता 50 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो, 50 से कम, 10 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो आजकल. ओनली मानवी हैज गिवन द आंसर टिल नाउ. व्हाट अबाउट अदर्स? चले गए, सो गए, बोर हो गए? किधर है जनता? I want all of you to answer, please. I know the chapters are long. I know I am boring, but ठीक है, थोड़ा पढ़ना जरूरी है. थोड़ा आंसर्स दे दो. Be active. There is a confusion between C, A, B, D. सब options आ गए मेरे पास. I'll wait for another 10 seconds. I want all of you to answer, please. Be very active on the chat. I know धनतेरस है. I know it's a Diwali weekend. But ठीक है, आधा एक घंटा तो पढ़ सकते हैं. बाकी पूरा दिन मत पढ़ना, कोई बात नहीं. The correct answer is, it is what the people of the country want the government to do. It is what the people of the country want the government to do. Okay, cool. NABARD as a development bank is concerned with various segments and issues except what? Sure, Asha. These are quiz sessions only. So small quiz sessions only. NABARD as a development bank is concerned with various segments and issues except what? I saw almost 60 good mornings और अभी आंसर सिर्फ 15-20 लोग दे रहे हैं. सब गायब हो गए, सब चले गए छोड़ छाड़ के. पढ़ना ही नहीं है क्या? ऐसे क्यों? Why? 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 Cool. So NABARD as a development bank is concerned with various segments and issues except the correct answer, which majority of you have given, is health of the farmers. RBI and SEBI can be termed as what? RBI and SEBI can be termed as what? RBI and SEBI can be termed as what? The correct answer is independent institutions. Independent institutions. Next question. Very carefully read it. A long question, but an interesting question. Jio offered free services to customers, still got away with CCI hammer. Which of the following concept of business environment can this be referred here? Interesting question, है ना? बताओ. Okay. Counter influence. Good, rubbish. You're still there.
I'm happy. I want you guys to be there. तभी तो मजा आएगा. The correct answer is counter influence, दोस्त. Counter influence. जियो ने environment को counter influence कर दिया. Geo ने counter influence means the environment was influencing Geo, but Geo influenced the environment back. उसको अपने हिसाब से तोड़ मोड़ कर दिया उसने, right? It molded the environment as per its whims and fancies. Counter influence. Okay, cool. Next question. बताओ, फटाफट से बताओ. Dr. Tulika, editor of a national magazine, advised that the government should sell small parts of PSUs to private players. What is she suggesting here? Good questions from an examination perspective. यहीं से पढ़ेंगे, सीखेंगे. वहां पे गलती नहीं करेंगे, यहाँ गलती करेंगे, which is important. यहाँ कर लो जितनी गलती करनी है, वहां पे मत करना. वहां मौका 6 महीने बाद मिलेगा फिर. Okay, I have a couple of options, but mixed answers. Let's see. She's saying sell small parts. She's saying government should sell small parts of PSUs to private players. Okay. That is right. The correct answer is divestment. The correct answer is divestment. Let's go to the next one. Question on your screen. Question is on your screen. Mr. Sharma wants to invest in securities of Singapore. Which of the following institutions will be concerned with such transaction? Mr. Sharma wants to invest in securities in Singapore. Which of the following institutions will be concerned with such transaction? बताइए. Invest करना चाह रहे हैं सिंगापुर में securities में. Which of the following institutions will be concerned with such transaction? ये अंकित का D के ऊपर लगता है गिर गया है, कोई वेट पानी का ग्लास गिर गया है. डी. Awesome. I have few answers. 5 more seconds for all of those who want to give the answer as well. फिर चलेंगे अगले पे. RBI and SEBI. आ जाओ. Next question. Next question. RBI as a controller of credit can use which of the following types of powers? RBI as the controller of credit. Question को बहुत ध्यान से पढ़ना. As the controller of credit can use the following types of powers. बड़े ही ध्यान से question पढ़ना. Okay. What a lazy day today. The correct answer is Raj. I'm not sure of the publisher, but उसका नाम ही स्कैनर है. वो ग्रीन या पर्पल कलर की बुक होती है, देखना एक बारी. Very easy. Simon says very easy. The answer is both qualitative and quantitative. That is right. Presence of Pepsi, Samsung, Honda, Microsoft in India is a result of what? अभी घूम जाओगे दोस्त. अभी घूम जाओगे. Presence of Pepsi, Samsung, Honda, Microsoft in India is a result of what? Privatization, liberalization, globalization, or foreign direct investment? Presence of Honda, Samsung, Pepsi, Microsoft in India is a result of
Privatization, liberalization, globalization of foreign direct investment. ये जैसी अंग्रेज कंपनियों के नाम है, हमारा एक्सेंट भी अंग्रेज हो गया. I know my British accents were awesome. You want a water ऐसा करके full British accent में बोलते हैं. Netflix को अगले मेरे को ले लेना चाहिए, right? हाँ, dubbing के लिए. The correct answer is globalization. Globalization. अब कहोगे यार ये ग्लोबलाइजेशन कैसे, एफडीआई क्यों नहीं है दोस्त? Because of this. They are examples of FDI, but they are the result of globalization. Those globalization की वजह से ही FDI है. FDI का presence is because of globalization. ये जो है कंपनीज का इंडिया में आना, this is example of FDI. This is example of FDI, but it is a result of globalization. Okay, very good. When a policy is rational for economic development, but not so for national integration, which of the following should a government opt for? खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया आपने तो. कोई बात नहीं समीर, आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं. आप ये आंसर के क्वेश्चन के ऊपर लिख के आ जाना रॉन्ग क्वेश्चन, फिर मेरे को मत बोलना कि मार्क्स नहीं आए. There will be trick questions दोस्त. Not everything will be very straightforward, but ठीक है, it's your choice. I know you're joking. If you're not, still. When a policy is rational for economic development, but not so for national integration, which of the following should a government opt for? बताइए, बताइए, बताइए. Mixed, capitalist, competitive, socialist, competitive, mixed. What else? Mixed, competitive, mix. Very good. और कुछ रह गया है? नहीं. The correct form should be mixed economy. Why? It should be mixed economy. Because when a policy is rational for economic development, but not so for national integration, that means economic development तो हो जाएगी, but गरीब लोग मर जाएंगे उससे. इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो जाएगी, बट गरीबों का ध्यान नहीं रख पाओगे दोस्त. तो मिक्स्ड इकोनॉमी में चले जाना चाहिए, वेयर द गवर्नमेंट इज आल्सो देयर, प्राइवेट कंपनीज आल्सो देयर. मिक्स, एक साथ रह के वो काम करेंगे, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी. कूल, दैट इज राइट. नाउ we are done with chapter number 5. Theek? We are done with chapter number 5. We are left with 30 minutes. I will spend another 3-4 minutes in any questions, any doubts that you have. Koi bhi doubt hai abhi tak from any chapter. So let's spend 5-7 minutes there. Thoda sa samajhte hain. If you have any doubts, if you want to understand a concept, repeat nahi karunga main concept. You can go back and look at the concept. If there is a confusion, I will be happy to answer that. नहीं, capitalism नहीं हुआ ना दोस्त. We will talk about, it is so mixed form of economy because it is good for economic development, but nation को एक साथ bind करने के लिए, not so good for national integration. अमीर बहुत अमीर हो जाएंगे, गरीब बहुत ज्यादा गरीब हो जाएंगे, ऐसी पॉलिसी है. अमीर बहुत अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब हो जाएंगे. दिस पॉलिसी के लिए हमें मिक्स्ड इकोनॉमी बना देना चाहिए, सो दैट बैलेंस हो जाए, राइट? सो दैट बैलेंस हो जाए. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज. ऑसम सागर, यू गॉट 7 out of 9, which is how much percentage? कितना परसेंटेज हुआ? Almost 80-85%, which is a great score.
Where does IRDA get funds from? जय, हमने बोला levies फीस चार्ज करती है इंश्योरेंस कंपनी से, सर्टिफिकेशन देती है, मेंबरशिप फीस लेती है, सर्टिफिकेट देने के पैसे लेती है, सब जगह से पैसा लेते हैं वो, राइट? इट गेट्स मनी फ्रॉम देयर टू ऑपरेट. आईसीआई के पास पैसा कैसे आता है? जो एग्जाम करवा रही है, एग्जाम फॉर्म का पैसा आ रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पैसा आ रहा है आईसीआई के पास. सिमिलरली आईआरडीआई के पास पैसे आ रहा है. सीए फाउंडेशन सिलेबस चेंज हुआ, स्कैनर ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो दोस्त. पुरान से जब सिलेबस चेंज हुआ है तो पिछले कुछ अटेम्प्ट में तो आया ही है ना ये, इस अटेम्प्ट में थोड़ा ना एकदम से चेंज हो गया है. How to differentiate between disinvestment and divestment and delegation? Mr. Gowda, very simple. Disinvestment और divestment में फर्क क्या है? Divestment is slowly and steadily बेचना. Disinvestment is one shot में you sell your company. Divestment is slowly, steadily you sell your company. And delegation is you give out tenders and contracts to other people. You do not do the work yourself. You delegate that work. If there is a road being built in your city, if there is a flyover being built in your city, the government says they give out tenders, and someone who wins the tenders as a private contractor, you and me, someone can be a contractor and we build the flyover for the government, right? This is called delegation. समीर, स्कैनर कुछ नहीं है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को स्कैनर बोलते हैं सीए की भाषा में, ठीक है? How to attend mock test, physical or online, whatever suits you, Divesh, whatever suits you. It's not a mandatory thing आपको कैसे करना है. Whatever gives you more confidence, do that, boss. If you're confused, हमेशा सिक्का उछालो, और जब सिक्का हवा में हो, ये ज्यादा फिल्मी हो गया, but that helps, right? Whenever you like उछालो a सिक्का and you know in your head कि your मन से इसकी या tails आ जाए, अब वही आंसर होना, चाहे heads आ जाए फिर tails वाला ही करना. थोड़ा फिल्मी है but it helps, right? It helps takes decisions. Passing criteria in BCK, Harnoor is getting 100 out of 100. यार आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं इतने घंटे आपके साथ बिता रहा हूँ, solving all your questions. Your criteria should be getting 100 out of 100, मतलब percentage. All your answers should be right. That is what I think should be your passing criteria. मन में तो यही होना चाहिए, आएंगे कि नहीं is a different thing. That is right. It's correct, Sahil. Awesome. Thanks, Keshav. Thanks for being connected on LinkedIn. It's good to connect with you guys there as well. And I think it will help all of you if you connect with many people there. Articleship मिलने में, industrial training मिलने में super duper help होती है दोस्त. Surya, you want me to tell the history of Nifty 50? Dost, Scam 1992 web series. I think it's there on Sony Live. Free हो गई होगी अब तक. Go and watch that. Enjoy your Diwali watching that series. It's like 7-8 hours है. Binge watch होगा. रुक ही नहीं पाओगे, शुरू होगी. Go and watch that. You will understand everything. Sama, that's a great dream and I wish you the best if you want to get All India Rank 1. I wish you the best and I hope you get All India Rank 1. Sure, Mayank, you can register for mock tests after revision करना है. Register तो करके रख ही लो, right? If register तो कर ही लेना चाहिए. And I could never give mock tests, but I wish if I look back, मुझे देने चाहिए थे, right? Awesome. Thanks, Sanchita, for the kind words though. But I'll be happy if the concepts are clear. That's the only idea. To become BSF soldier, ये समीर भाई तू किधर से लाता है रे सवाल भाई? This is अभी सिलेबस चल रहे, BSF soldier बनने का प्रोसेस पूछ लिया. We're talking about business and commercial knowledge. Sameer is studying BCK while becoming a BSF soldier. ये किधर से लाया दोस्त?
all these questions, I think we have a last session next Saturday. आज अभी हम थोड़ा सा चैप्टर 6 शुरू करेंगे. In next 5 minutes I'll do chapter number 6 शुरू करेंगे. कल के सेशन में चैप्टर 6 कंप्लीट कर देंगे. नेक्स्ट सैटरडे see I don't know if Saturday है या Sunday है. For now it is Saturday, but I think it will be pushed to Sunday, right? I'll check and probably you can see the schedule. वो schedule change होगा, you'll get to see. याद से देख लेना schedule दोस्त next week का. If within the next week it might get changed. For now it is Saturday, but I think the last session will be on Sunday because I have another thing happening on Saturday, so I might want to push it on Sunday. But देखते हैं, keep checking the schedule before the next week का session. एक बारी schedule जरूर देख लेना please. Right? I don't want you to come on Saturday and say कि क्लास ही नहीं है. चेक कर लेना, सैटरडे होगी तो सैटरडे रहेगा, वरना चेंज हो जाएगा संडे को. ले लो दोस्त समीर 5 मिनट क्या 10 मिनट ब्रेक ले लो. There are all these questions that where I did articleship from, where am I working, what I do. Last session में full 2 hours only गप्पे मारेंगे, right? I'll tell you how to get articleship. Articleship में क्या होता है. I will help you understand my idea. My personal viewpoint is हमें पता ही नहीं होता CA करता क्या. देखो, unless I became a chartered accountant, I had no clue दोस्त की CA करता क्या है, काम क्या है भाई आपका. इतना कुछ तो आपने पढ़ा दिया हमें, right? It's a genuine question that every student has is 6 subjects, 5 subjects यहाँ पे, इंटरमीडिएट में 7-8 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, फाइनल में 7-8 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, 15-16 सब्जेक्ट पढ़ा दिए मुझे. मैं काम क्या करता हूँ, मुझे नौकरी क्या मिलेगी, मैं प्रैक्टिस में क्या क्या काम कर सकता हूँ. कैन आई गो टू अ फॉरेन कंट्री, कैन आई गेट अ जॉब इन दुबई, कैन आई गेट अ जॉब इन नेदरलैंड्स, कैन आई गेट अ जॉब इन यूएस, कैन आई गेट अ जॉब इन सिंगापुर. Yes you can. Yes you can. What kind of jobs do I do when I go outside the country? I'll tell you what you should expect to do. What kind of a job a chartered accountant does. What are the different profiles a chartered accountant gets into? It's FP&A, it's business finance, it's commercial finance, supply chain finance hota hai. Then you have auditing, internal audit, stat audit, taxation, internal tax, external tax, client facing job hota hai, transfer pricing hota hai. दुनिया जहान का काम करता है CA, right? But हमें पता नहीं है हम क्या करना है, what interests us. So I will take that session for sure. Be there for that session because I think that is going to open up your mind about what to expect in the next 4 years. What is it going to be like after 4 years? And that I think I can help you give from my personal viewpoint. Right? मुझे ज़्यादा नहीं पता है, but जितना पता है I'll tell you. संचित, I think there are 2 संचितास, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो. There might be 2 संचितास. There are 2 Sanchita. There is Sanchita Gupta and there is Sanchita Yadav. So that is why you're getting confused. कि मैंने तो question पूछा नहीं, आंसर किसका दे रहे हो. Difference between privatization and delegation. Privatization का form है delegation साइमा. Privatization का एक तरीका है delegation. Okay. सूर्य, मैं सोने की घड़ी खरीदने वाला हूँ आज धनतेरस पे. I will buy a gold watch because I am दुबई का शेख. Kirti, next 5 years you will also have a lot of knowledge. एक कोर्स ही ऐसा है. You will meet 5,000 people. You will study about things which you have not even heard about. मजा आएगा, बहुत मजा आएगा. अभी फॉरेक्स में like traders, CAs work. If you go to any mutual fund, आप जाके गूगल पे सिर्फ लिखो म्यूचुअल फंड को हेड कौन करते हैं. Every mutual fund has a mutual fund manager जो पूरा म्यूचुअल फंड मैनेज करता है. सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट? बहुत काम है दोस्त मार्केट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए. यू जस्ट नीड टू नो what happens in industry. You just need to be aware. You just need to Google things. You just need to talk to people. बहुत कुछ है करने को, बहुत अच्छा पैसा है हर जगह. Okay,
we have studied rectification of error in accounts, or in real life, do rectification entry after audit? We do. We do. There are a couple of instances when you can do that, which come as adjustments, which has to be notified, very clearly communicated. See, simple है. तो CA के when you study audit, right? Audit में क्या लिखा होता है? Audit में लिखा है chartered accountant is a watchdog, not a bloodhound. इसका मतलब क्या है? हम लोग we are watchdogs. We actually look at things are going right or not. Bloodhound काटने नहीं आ रहा हूँ आपको, ओए तू जेल जाएगा, तेरे को फाइन लगेगा. No, that is not what my job is. My job as a chartered accountant is to let you know you're doing the wrong thing. And I will call that out. I will write in my report, this is what they're doing wrong. Even if people want to trust them, it is their call. If you want to trust that, that's their problem. Like you are the best friend for your friend who is telling कि यार वो लड़का बहुत ही खराब है, उसके साथ मत घूमो. But if your friend wants to still roam around with those boys or boy, that's their job. That is what a chartered accountant is. अभी इसको reverse, लड़के लोग कहेंगे लड़के थोड़ी ना खराब है. Same goes for boys. If a boy, your friend says कि उसके साथ मत घूम, right? You can only tell them. पकड़ के थोड़ा ना ताला लगा दोगे, हथकड़ी बांध के रख दोगे, नहीं घूमेगा उसके साथ. That is what CA also does. That is what an auditor does. Cool. Thank you, Barkatullah. Good to see an emoji in the chat finally. थोड़ा कलर दिखा मुझे, सारा कुछ काला काला दिख रहा था. Okay, great question. I have been asked this by so many people. Regular college करे या correspondence? Okay, I'll give you my personal 2 cents on this. Sanchita Yadav. Okay, Gupta will again say यार मेरे को तो मैंने तो question ही पूछा. So should you join a regular college or you should go for correspondence? See, there are 2 things. First is a regular college. If you're getting a good regular college, if you have scored really well in class 12th, you're getting that opportunity to go to a fantastic, well-renowned college in your area, in your state, in like a Delhi University or a big Mumbai University or whatever is famous in your state. I'm not just saying Delhi, Mumbai as the crown places, but if you're getting a fantastic college like a Xavier's in Kolkata as well, right? Go for it. Go for a regular college. It is going to change you as a person. But if you're not getting a good college, ज़्यादा emotional नहीं होना, correspondence से कर लो. Life will be exactly the same. ठीक है, ज़्यादा stress नहीं लेना है. But if you're getting an opportunity to go to a fantastic or a great, well-renowned college, go for it. तब उसमें option मत ढूंढना. Right? But if you're thinking that I'm not getting a good college, which is because there is so much competition in the country, which is there for everyone, then go for correspondence, but your life will be equal against everyone. वो लोग ज़्यादा, why is it better? Because you get a brand image, right? You get a brand tag added to your resume, which helps. बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, बट हाँ थोड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा. बट जिसके पास नहीं है वो, ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही नीचे रह जाओगे. यू विल स्टिल बी डूइंग ऑसम इन योर लाइफ, राइट? तो बस डरने का नहीं है. अरुण, विच कंपनी? नॉट जस्ट वन कंपनी, आई वर्कड इन मेनी कंपनीज, वो भी बताऊंगा आपको. थैंक्स सूर्या, इतने सारे कलर्स वापस डालने के लिए. 4-5 इमोजी भी काम करते, आपने पूरा कीबोर्ड ही डाल दिया. संजय, you're getting Kamala Nehru College. Do you go for it? Go for it. अच्छा कॉलेज है. हरनूर is doing BCom honors with CA. Best of luck हरनूर. आपकी तो नींदें उड़ने वाली हैं, मजा आएगा. Out of 150 crore, only 3 lakh CAs are there in India, which is 0.00025%. बाकी सब इंजीनियर है ना दोस्त, इसलिए 150 करोड़ में 3 लाख ये मेट्रिक ही गलत है. अब ये बोलो कॉमर्स, अभी इसको बनाओ, हाउ मेनी पीपल स्टडीड कॉमर्स एंड दे आर CA, 99% निकल के आ जाएगा परसेंटेज. अभी ये समीर ने तो ज्यादा ही कलर भर दिए भाई, हर कलर का इमोजी डाल दिया दोस्त. अच्छा अच्छा, इट्स दिवाली, थोड़ा कलरफुल चैट बन गई है. You got BHU campus. Should I go for regular college or CA together?
मयंक, इफ यू कैन हैंडल रेगुलर कॉलेज विद योर स्टडीज, गो फॉर रेगुलर कॉलेज. मैं वही कह रहा हूँ दोस्त, अच्छे कॉलेजेस को मत छोड़ना, गो फॉर देम. ट्राई टू मैनेज सीए विद योर रेगुलर कॉलेज. हो जाता है दोस्त, पूरी दुनिया कर रही है. बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स विद सीए, विच इज बेटर? सी, सीए के साथ तो बीकॉम ऑनर्स बेटर है, बट स्टैंड अलोन इको ऑनर्स हैज मच मोर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, मतलब आप इफ यू वांट टू गो आउटसाइड इंडिया, इको ऑनर्स का ज्यादा वैल्यू है. इफ यू आर डूइंग सीए, गो फॉर बीकॉम ऑनर्स. दैट्स माय पर्सनल व्यू. अच्छा, मेरे को बाद में पकड़ मत लेना, मेरा जीवन खराब कर दिया आपने. मैं अपने पर्सनल व्यू से बता रहा हूँ दोस्त. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. Market is subject to market, your decision is subject to market risk. Please read all the document offer letters carefully. कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, शुड आई टेक इन प्राइवेट? डिपेंड्स यार कौन सा प्राइवेट कॉलेज है सिर्फ. बट दैट्स गुड इफ यू वांट टू एंजॉय सम टाइम. देखो 18-19 years की एज में, और 20 years, whatever your age is, I'm guessing that's what your age is, you should eventually go and make friends. वो कॉलेज में ही मिलेगा, right? और इफ यू गोइंग टू सीए कोचिंग क्लासेस, वहां भी दोस्त बन जाते हैं, वहां भी अच्छा ग्रुप बन जाता है. घर मत बैठे रहना प्लीज. माई ओनली कंसर्न इज घर में सिर्फ लैपटॉप के सामने मत बैठे रहना. इट विल नॉट बी बेनिफिशियल. थोड़ा सा बाहर जाना है. इफ यू थिंक कॉलेज गोइंग टू गिव दैट, go for it. If you think CA classes are going to give that, go for it. Whatever helps you make a friends group, do that. तो मैंने तो सब पढ़ाई करी है, मैं तो इतने कोर्स किए हैं कि मैं अब देखो टीचर ही बन गया हूँ. नहीं सीरियसली, बीकॉम ऑनर्स के साथ सीए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है. इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट थोड़ा हेक्टिक तो होता है. देखो, इज अटेंडेंस इम्पोर्टेंट इन डीयू? मेरे टाइम तो नहीं थी दोस्त. आई तो हैव गिवन एग्जाम्स even on like what 45-50% attendance. But you have to be थोड़ा सा smart with your teachers. But वो है थोड़ा extra curricular में थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा तो हो जाएगा. वो तो you are smarter than me, you know how to handle people. मैं तो क्या ही बताऊंगा आपको. Thanks Surya, very happy Diwali and Dhanteras to you as well. ये बीच में आया but अच्छा है. That also works, Manvi. If correspondence is there, that's okay. Whatever helps you. Just be confident on whatever your decision is. ऐसा मत डिसीजन लो कि जो मन ना हो और वो डिसीजन ले लो, वो मत लेना. जो भी करो मन से करना, और या फिर डिसीजन ले लिया तो उसको मन बना लेना. कॉलेज करना जरूरी है. मैं भी सीए कर. ओके, college is, see, from my personal perspective, that is again, if you're getting a good college, do not skip that. Go for it. ठीक है. हाँ जी मयंक, आई एम फ्रॉम डीयू. किस्मत से मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे 12th में, तो मेरा तुक्का लग गया एंड आई गॉट इनटू डीयू. Keshav, yes, I am also taking classes for strategic management at intermediate level. जबरदस्त मजेदार सब्जेक्ट है वो भी. वी टॉक अबाउट लॉट मेनी स्ट्रेटजीज दैट कंपनीज आर डूइंग, और हाउ इज अ फ्लिपकार्ट वर्किंग, हाउ इज एन एप्पल वर्किंग, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, वो सब पढ़ते हैं वहां पे. मजा आता है, राइट? आई टीच स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एट इंटरमीडिएट लेवल with the same VLC ICI. तो मुझे तो नहीं लग रहा हम चैप्टर 6 आज करेंगे. कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास. टाइम इज मनी, और टाइम तो अपने पास बहुत है. हैप्पी दिवाली अभिनव टू यू एंड योर फैमिली एज वेल. Okay, it requires you to do anything else such as BCom, MCom. Is it mandatory or not? It is not mandatory, Surya. Nothing is mandatory, but it does give you an added advantage. ठीक है, जरूरी नहीं है, but एक advantage होता है. बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस सीए के बराबर है क्या? नहीं दोस्त, इट्स वेरी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है. What is Business Accelerator? Business Accelerator are group of people who help businesses through ideas, through support. उनको help करते हैं, उनको guide करते हैं, उनको बोलते हैं Business Accelerators.
आगे आज तो मुझे लग रहा है दोस्त गप्पों में टाइम चला गया. I can start chapter 6 and I can also not start chapter 6. But I'm thinking कोई बात नहीं. अभी फेस्टिवल सीजन है, we'll not start chapter 6. Chapter 6 बहुत छोटा सा है. I will not go through all the terms we have in chapter 6. वो कल आराम से 2 घंटे में पूरा हो जाएगा. So I don't want to rush things here. I want to take it slow. Cool. Okay. इंटरमीडिएट लेवल ऑब्जेक्टिव, इट्स बोथ साहिल. ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आता है इंटरमीडिएट में. You should go to KNC, Sanchita. My guess is you should go to KNC. Which college, Manvi, you asking from? Delhi University, Hindu College. You want to know about me? Go and reach out on LinkedIn. Everything is there. What is LODR? Yeah, LODR, I know 3-4 meanings of LODR. With reference to what are you asking, Zeba? LODR? I don't know. मैं तो सिर्फ खा पी के दिवाली मनाने वाला हूँ. I am तो only going to eat a lot of junk food. ग्रीन दिवाली या पटाखा, तो हम तो खाने वाली दिवाली. Startup India and Stand Up India are business accelerators. You can say that these are business accelerator programs of the government. You can say that. मैथ्स के पेपर की ट्रिक दोस्त एक ही है. Practice as many questions as you can. मैं तो कह रहा हूँ हर सब्जेक्ट का यही है. You just have to practice questions दोस्त. सिलेबस पे टाइम कम लगाओ, क्वेश्चंस पे टाइम ज्यादा लगाओ. It will be beneficial. Thanks, Bala Sanjana. Very happy to you as well. Happy Diwali. मैं दिवाली बोलना ही भूल गया. Cool. I think we are done with the questions we had. I still have 7-8 minutes. Can we just wrap up the session now? आज 10 मिनट पहले कर देते, कोई बात नहीं. Festive season है, 10 मिनट कम चलेगा. We'll do chapter 6 tomorrow. And then next week, last session है, where I'll talk about the CA course, the future, what you should expect, how you should actually find articleship, कहाँ करनी चाहिए, articleship में क्या क्या होता है. I'll try to make a PPT, वरना हाथ से लिख के I'll explain you a lot of things. I think आराम से I can cover 1.5 hours, and then we have you guys to ask questions. So वो next week be present. I think it's going to be very beneficial at a foundation level, what to expect after becoming a CA or throughout the journey of the next 4-5 years, what to expect and how to make it better. What things I could not do, what you can do better. I think I'll try to explain those things. Right? Can we wrap up the session aaj, abhi, and then we meet tomorrow for chapter 6? Give me a yes if it's okay with you guys, and we'll wrap up in another 1 minute, saving 7-8 minutes on the class today. Sure, Keshav, I am a hardcore memer. मेरे को तो जितने मीम भेजो उतना कम है दोस्त. मैं तो पूरा दिन मीम देख सकता हूँ. Cool. A very happy Diwali and Dhanteras to everyone. आज भी बोलूंगा, कल भी बोलूंगा क्लास में. It's a great season. Be safe and have some fun. पढ़ते मत रहना सिर्फ दोस्त. 2 दिन में ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेना, बट ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. आराम से थोड़ा रिलैक्स भी करेंगे. And it's also really necessary for your brain to relax. Go watch a good movie. Go watch something. Eat chips. Pepsi chips लेके बैठो, आराम से कोई वेब सीरीज मूवी देखो. Relax, and I will see you tomorrow. Thank you for everyone who's been active, who's been there on the chat, and everyone who's watching these sessions. Right? It's been amazing. And I'll see you tomorrow. We'll do chapter number 6, which is the last chapter, terminology. छोटा सा मजेदार chapter है. We'll complete that today, and with that, our syllabus will be completed. Cool. All right, guys. I'll see you tomorrow then. Be here active again, same time, 11 a.m. And I'll see you guys. Thanks. Vinuji, the session is concluded.